So we have reached to the place which you call as the beautiful place because this is having the mix of American and European culture. The streets are so beautiful, the place is so beautiful, there are so many eateries out here. The way it is being made is like nothing else than this. You will find the windmills, there are 3 4 windmills, there are small houses which gives you a glimpse of a fairy tale, and the trees and the roads and the small turns and the twigs makes you feel like that you are in a wonderland. And this wonderland is as beautiful, rather more beautiful than any thought about the wonderland. This is so beautiful place that you don't want to miss it anytime. देख सकते हैं हम यहाँ डैनिश विलेज में हैं। डैनिश विलेज, क्या हम डेनमार्क पहुँच गए, नीदरलैंड्स पहुँच गए, यूरोप में हैं? जी नहीं, मैंने आपको बताया था मैं कैलिफोर्निया में ही हूँ। लेकिन यहाँ कैलिफोर्निया में इस तरीके का विलेज कहाँ से आ गया? तो ये जो पार्ट है ये डैनिश लोगों ने सेटल किया था सबसे पहले। तो ये विलेज एज इट इज़ मेंटेन्ड है, तो इसको अकेला डैनिश विलेज ऑफ यूएस बोला जाता है। तो यहाँ आप पूरा का पूरा आप देख सकते हैं, वातावरण, हैंडीक्राफ्ट्स, इवन घरों का आर्किटेक्चर सब कुछ डेनमार्क स्टाइल से है, डैनिश स्टाइल से है। तो आप देख सकते हैं ये विंड मिल्स हैं, ये देखिए विंड मिल्स। सारे जो एंटीक शॉप्स मैंने बीच बीच में आपको दिखाई वो सारा एज डैनिश स्टाइल है। तो फिर आगे और भी इस विलेज को मैं दिखाऊंगी, तो बने रहिए। So welcome to Danish Capital of America, Solvang. And the beautiful Danish capital, which is a small town, gives you all the feelings which you want to have from Denmark. It is having each and everything which you thought of about how it would be if you would be in Denmark. It is having the church, it is having those flags, all the shops, pastry shops, and the shops which will give you all the souvenirs which resembles the Danish beauty. It is also having the cultural glimpse and with the beautiful nature of America, giving the sunlight and making it a place where we want to visit. So there are so many activities which you can do here, like you can do cycling, you can do skating, you can do walking, you can go in and around. So Yukti, what do you want to do here? Walking tours, because I love walking tours, and this city is very much feasible by walking trips and trolley trips, which you must really enjoy here. You would surely love this city as a European, with the European vibes, because this city has been developed or inhabited by Danish people. Danish people first came to this land and has made their homes here, so that is the way it is preserved. And this is not the only things which you can do here. There are many other things like shopping, like eating, like going and seeing the beautiful streets. And also you have a tourism place, like where you can go and check that what more you can see here. And one more thing which I want to share with you, you really want to do here is the morning and the evening sun, because it is a small city, it gives you the feel of the beautiful sun in and around. तो जैसे कि अमित ने आपको बताया कि यहाँ बहुत ही खूबसूरत है और बहुत मज़ा आता है आसपास चलने में, फिरने में, इस शहर को महसूस करने में, क्योंकि ये ऐसा लगेगा जैसे कि हम यूरोप। बताइए हम कहाँ हैं? डैनिश विलेज में है, डेनमार्क में है, लेकिन पर मैं तो कैलिफोर्निया में थी। तो आप कैसे कहेंगे कि मैं कैलिफोर्निया में हूँ या डेनमार्क में हूँ? पीछे से देखने में तो ऐसा लग रहा है कि हम डेनमार्क में हैं या स्ट्रासबर्ग में हैं या जर्मनी में हैं, लेकिन पर कहीं कहीं अमेरिका के झंडे भी दिख रहे हैं। तो क्या हम अमेरिका में हैं? जी हाँ, हम अमेरिका में हैं, कैलिफोर्निया में, सोलवांग में। सोलवांग, जो कि बहुत ही प्यारा प्यारा शहर है, डैनिश विलेज कहा जाता है, अमेरिका का फर्स्ट डैनिश सिटी, क्योंकि इसे डैनिश लोगों ने बसाया था सबसे पहली बार।
इसलिए ये डेनिश सिटी है। देख सकते हैं ये हूबहू ऐसे की ऐसे ही मेंटेन किया गया है ना। तो आपको आ रहा है ना आनंद, यूरोपियन मज़ा अमेरिका में इस डेनिश विलेज में, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है अपने खूबसूरत घरों के लिए, यूरोपियन स्टाइल मार्केट्स के लिए, जो कि आप देख ही सकते हैं मेरे पीछे चारों तरफ। बिल्कुल आपको लग रहा होगा कि जैसे कि मैं यूरोप में खड़ी हूँ। बिल्कुल वैसी वाली फीलिंग आ रही है यहाँ आकर। और ऐसी की ऐसी अभी तक ये घर मेंटेन्ड हैं। सारे मार्केट्स, रेस्टोरेंट्स, इवन डेनिश बेकरीज, फूड आइटम्स भी यहाँ आपको मिलेंगे।